Inflammasomes in inflammation. Inflammasomes, as the name suggests, that means infla means from the inflammation, and somes means that are the bodies which are present inside the cells. They are involving or executing the process of the inflammation. That's why these are called as inflammasome, like lysosomes. जैसे lysosomes हैं, like oxiosomes, like you can say that these all are the cellular organelles जो कि help out करते हैं cells को for different processes. So inflammasomes, they are helping out the or executing the process of the inflammation. That's why these are called as inflammasome. Inflammasome, in fact, these are the multi-protein oligomer structure. Multimeric proteins हैं जो कि oligomeric form में arrange होती हैं cells में, and whenever they are just going to arrange, so there is an activation process. That's why that is called as inflammasome activation. So these are responsible for the activation of the inflammatory responses. कि inflammasomes जब ये अरेंज होंगे, ये अरेंज होके मल्टीमेरिक प्रोटीन्स ओलिगोमर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगी, आफ्टरवर्ड inflammasome activation होगी, और inflammasome activation directly it will causes the inflammatory process और inflammatory response को activate करेगी. And these inflammasome, they promotes the maturation and the secretion of the pro-inflammatory cytokines like IL-1 beta and IL-18. जो pro-inflammatory cytokines हैं जो कि inflammatory process को enhance करते हैं, उनकी secretion, उनकी maturation in organelles जो कि cells के which are very novel or very latest kind of organelles discovered, ये help out करते हैं सेल को, particularly immune cells, कि वो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की मैचुरेशन कर सकें और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस सक्रीट हों, और दे विल कॉजेज यू कैन से दैट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. इन्फ्लामेसोम मेनली एक्सप्रेस इन द माइलॉइड सेल्स. जो माइलॉइड सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, उनकी सरफेस पे दे आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्रेस. दैट मीन्स दैट मेनली द मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यून सेल इन इनेट इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम के जो मेनली सेल्स हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग the inflammasomes, but the other cells, they also have some expression, latestly they are found. So these are the component of the innate immune system. In non-specific manner, they are expressing on the innate immune system cells, and as a result, the inflammasomes, they are predominantly or acting in the innate immune system. Now, the secretion of the cytokines upon inflammasome activation leads towards cell death process. It means कि जब inflammasome activate होंगे और inflammasome तब activate होंगे, that means that whenever there is an harmful stimulus would be there. जब harmful stimulus होगा, like in a form of infectious agent, or you can say that certain danger molecule is being there, like physical or chemical compound, so inflammasome, they are just going to activate. और जब वो एक्टिवेट होंगे, साइटोकाइंस जो कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हैं, उनको सक्रीट करेंगे, और आफ्टर सक्रीशन दे आर गोइंग टू डाई. दैट प्रोसेस इज अ डेथ प्रोसेस. और उस डेथ प्रोसेस से क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो उसके अंदर जो इन्फेक्शियस एजेंट है या कोई बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया उसके इंजेस्टेड बैक्टीरिया है, उसकी किलिंग हो जाएगी. दैट्स व्हाई दैट इज अ किलिंग प्रोसेस. So that kind of cell death is a special kind of cell death that is called as pyroptosis. So it is that cell death induced after inflammasome activation. जब inflammasome activate होते हैं और cells die कर जाएं, तो that is called as pyroptosis. एक और program cell death होती है जो कि cell को kill करती है, that is called as apoptosis. This is different from the apoptosis, क्योंकि इस केस में जो cell की death हो रही है वो after inflammasome activation हो रही है, कि means cells जो है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेंगे, और आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस और inflammasome activation, they are just going to die. So that is why it is called as pyroptosis process. So the pyroptosis mediates the inflammatory process by killing the infected cell in physiological state. Means physiological state में जब normal condition में these are immune cells, whenever they are exposed to harmful stimulus, तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेसोम्स को एक्टिवेट करेंगे, और इन्फ्लामेसोम की एक्टिवेशन की वजह से वो जो इन्फेक्टेड सेल है जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट से, इट इज़ गोइंग टू डाई, एंड दैट इन्फेक्शियस एजेंट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड. द पैथोलॉजिकली इंक्रीज्ड पायरोप्टोसिस लीड टुवर्ड इन्फ्लामेटरी डिजीज. अगर
तो इन्फ्लेमोसोम एक्टिवेशन पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो, मतलब एक्सेसिव एक्टिवेशन हो जाए इन्फ्लेमोसोम्स की, तो इट लीड्स टूवर्ड द पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स है। जैसे हमने देखा कि जब साइटोकाइंस की सिक्रीशन नॉर्मल लेवल से बढ़ जाती है, तो साइटोकाइंस जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं और इधर एंटी इन्फ्लेमेटरी, यू कैन से दैट they causes the inflammatory state, that is an pathological condition. So germline encoded PRRs means pattern recognition receptors. They are going to be there of the immune cell like TLRs or not like receptors. They are present inside in it, and PRRs recognize the pathogen associated molecular patterns. ये बात हमने देखी कि पैथोजन की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकग्नाइज करेंगे PRRs, जो कि जर्म लाइन एक्सप्रेस करें इम्यून सेल्स इन अ फॉर्म ऑफ TLRs, और उसकी रिकग्निशन के बाद देयर वुड बी दी एक्टिवेशन ऑफ द इन्फ्लेमोसोम। जब इन्फ्लेमोसोम्स की एक्टिवेशन होगी तो अल्टीमेटली देयर इज एन एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन, दैट मींस कैस्पेज 1। कैस्पेज 1 एक प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट होगी, और उस कैस्पेज 1 की एक्टिवेशन की वजह से it will causes the cleavage of the pro or inactive form of the pro-inflammatory cytokine like IL-beta or IL-18. Here, in this figure, you can see that. What's going on? Here, the PAMs are there, like in this case, like PAMs are there, or DAMs mean danger-associated molecular pattern, or pathogen-associated molecular pattern whenever they are going to be there. They are being recognized by the TLRs. Here, the TLRs are going to be there. They are interacting, they are recognizing. As a result, जब इनकी रिकग्निशन होगी तो सिग्नल 1 इज गोइंग टू बी देयर, जो कि जो न्यूक्लियस में डीएनए है उसमें एनएफ कैपा बी एक्टिवेशन करेगी, और उसके नतीजे में प्रो IL-1 बीटा और प्रो IL-18 उसकी सिंथेसिस होगी। एंड एज अ रिजल्ट, जब इसके साथ साथ वेन एवर देयर वुड बी देयर इज ऑल्सो द accumulation of all these components of the inflammasome like ASC, caspase 1 and inactive NAP3, that is one of the important molecule of the inflammasome. So now they are just going to arrange, they are forming an oligomer, and this structure is called as inflammasome. पहले वो इंडिविजुअल प्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस स्टिमुलस, so they are just going to arrange, they are going to organize in such a way that is forming an inflammasome, that is inflammasome activated form. और as a result of this inflammasome, the active caspase 1, ये जो प्रोटीन है that is caspase 1, it is going to synthesize. और एक्टिव caspase 1 would serve as an enzyme for, उसका substrate क्या होगा, pro IL-1 beta and pro IL-18, और finally they will convert into the mature form like IL-1 beta and IL-18. So you can see that after inflammasome activation, जब PRRs और PAMs का interaction हुआ, और as a result जो caspase 1, that is the major, you can say that substrate for the inflammasome activation, जब caspase 1 produce हुई तो caspase 1 ने जो pro form है pro inflammatory cytokines की like IL-1 beta और IL-18, उसकी maturation की into mature IL-1 beta and IL-18. So that is the basic process behind it. That means that inflammasome activation, indirectly caspase 1 activation, or whenever the caspase 1 inactivation would be there, see activation of the pro-inflammatory cytokine like IL-1 beta and IL-18. This is very important. Now, the dysregulated inflammasome activity leads to pathological states like autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, inflammatory bowel diseases, and similarly there are certain inflammatory disorders are also occur, metabolic disorders, cancers. They are the different conditions. जब inflammasome की hyperactivation हो जाएगी, it will causes. For example, here in this figure you can see that the chronic and acute inflammation is there, and as a result of this inflammation, the inflammasome, they are just going to activate it. Inflammasome activate हो रहे हैं, mature IL-1 beta प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके नतीजे में क्रॉनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो कि पैम्स की वजह से हो रही है, माइक्रोबियल अटैक और स्टेराइल, दैट इज मीन डैम्प्स, मीन डेंजर एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. और व्हेनेवर दे आर जस्ट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड इन एन हाइपर वे, सो ये बॉडी के ऑल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक हार्ट हाइपरटेंशन करेंगे, मेटाबॉलिक, डायबिटीज, कैंसर, देयर इज इंटेस्टाइन लाइक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, स्किन एलर्जी, brain Alzheimer's, Parkinson's disease, lung asbestosis, COPD, and asthma. All these conditions which are inflammatory in nature, they are going to be produced as a result of the activation of the inflammasome. और inflammasome की activation का मतलब है caspase 1 की activation, और caspase 1 की activation का मतलब है कि IL-1 beta और IL-18 की secretion mature form, or cells they are going to kill by the process of the pyroptosis, and that is an pathological state whenever such kind of inflammatory states are going to be there.